हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेल, इस नाम में छुपा है एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे पास हैं कंडक्टर्स के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है। किस टाइप के कंडक्टर्स में किस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। वेलकम टू साइंस अरीना। आई एम मोनिका। डेफिनेशन समझ लेते हैं अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। वेल, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ इन मैग्नेटिक फील्ड्स को हम स्टडी करेंगे अक्रॉस कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। वी हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर, वी विल डू इट फॉर अ सर्क्युलर लूप एंड फाइनली द सोलेनॉइड। स्टार्ट करते हैं कि ये नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स जो डेवलप होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, वो कैसे दिखते हैं। ऑलराइट, सो हियर आई हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर। लेट अस से AB is our straight conductor and we have connected this conductor to, of course, a current source. So here's a battery. Now the battery is going to supply the necessary electric current. जैसे करंट पास होनी शुरू हो जाती है थ्रू दिस कंडक्टर, वेल यहाँ पे डेवलप होते हैं अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड क्या ये एक ही सेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डेवलप हुआ है? नहीं, इट इज हैपनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर AB। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थ्रू आउट द लेंथ AB डेवलप होंगे, right? So if we have a longer length of wire conductor, naturally number of such concentric circles will be more. So that means we want to say that the magnetic field strength will be more. इस पे वापस से आएंगे। So the fact is, कैसे पता चलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डेवलप हुए हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में? पहले हम चेक कर सकते हैं ना। वी हैव अ मैग्नेटिक कॉम्पस। मैग्नेटिक कॉम्पस को अगर हम इस कंडक्टर की प्रॉक्सिमिटी में रखेंगे तो जो नॉर्थ ऑफ द कॉम्पस है इट विल अलाइन इटसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड वी सी दैट द पैटर्न विच इट अलाइंस विथ इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वैसे विजुअली कुछ ऐसा दिखता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, हियर इज अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर and these are the concentric circles which have formed around this particular straight conductor as a result of passage of electric current, right? So अगर हम let us go back to understanding कि अगर हमारे पास एक straight conductor है जैसा कि इस फिगर में हमने देखा हुआ है and there is a particular direction in which the current is being passed through, then how can we ascertain the direction of the magnetic field lines? Magnetic field lines clockwise होंगे या anti clockwise होंगे, ये हम कैसे पता करें? Here comes the right hand thumb rule जिसे हमें अप्लाई करना होगा। अब right hand thumb rule क्या होता है? Well, ये रहा हमारा right hand. Now the thumb is going to point in the direction of the current. ये अगर हमारा straight conductor है where the tip of this pen is going to indicate the direction of current, I will have this conductor in my hand holding it like that and my thumb pointing in the direction of the current flow. Then the direction of the whirl of the fingers will give us the direction of the magnetic field lines. What I can see it from my side, the direction of magnetic field lines is anti-clockwise, right? अगर हम direction of current reverse कर देंगे, that means it is now flowing in a direction like this, then the thumb pointing in the downward direction shows that my magnetic field lines have developed in a clockwise pattern. The right hand thumb rule is what we are going to use to ascertain the direction of the magnetic field around a straight line conductor. इसी राइट हैंड थंब रूल को हम अप्लाई करेंगे सर्क्यूलर लूप में भी। सर्क्यूलर लूप इज नथिंग बट अ रिंग, राइट? इट इज नथिंग बट अ रिंग। व्हाट वी कैन कंसिडर दैट रिंग टू बी? अगर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दिस हाफ इज वन स्ट्रेट कंडक्टर एंड द अदर हाफ इज द अदर स्ट्रेट कंडक्टर। वी कैन assume the conductor which is a loop to be
a combination of two straight conductors. So एक हाफ में अगेन राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे एंड देन सेकेंड हाफ में हम सेम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे to ascertain the direction of magnetic field lines that will develop in the two halves of one circular loop. So let us see how it works. So यहाँ पे हमारे पास है the direction of current which is moving from the positive terminal, right? We can see that, and it moves up this particular half circle and then comes down the other half circle. Now if you look at the direction of current using the right hand thumb, the thumb pointing in the direction of the current, the whirl of the fingers gives us the direction of magnetic field lines. So अगर हम देखें तो direction of magnetic field lines according to the whirl of the fingers is anti-clockwise. Now naturally दूसरे हाफ में इसका opposite होगा. क्यों opposite होगा? Now the direction of current is in the downward direction. So when we whirl the fingers, it moves in the clockwise direction. So that is how we can ascertain the direction of magnetic field lines, which are very evidently in opposite directions in the two halves. But the thing to be noticed, बीच में सबका डायरेक्शन सेम हो गया है. If you can just see that, because यहाँ पे when it is anti-clockwise it is moving in this direction, and यहाँ पे when it is clockwise it is moving in this direction. So at the center of the loop, all the magnetic field lines through all the segments of the circular loop are all in the same direction. So many magnetic field lines flowing in the same direction end up becoming almost parallel to each other. So ऐसे magnetic field lines को क्या बोलते हैं? Well, they are called uniform magnetic field lines. So uniform magnetic field lines अगर मुझे represent करना हो, so they are nothing but parallel straight magnetic field lines. So center में क्या होता है? The magnetic field lines which never cross each other are all moving in the same direction, and hence the magnetic field strength along the center of the coil, along the axis of the coil, is the maximum. So it is the strongest along the axis of the circular loop. Now what are the factors on which the magnetic field strength which will develop along the length of the straight line conductor depend upon? So वो factors क्या हो सकते हैं? Number one, more the current you pass through the conductor, naturally there will be more number of magnetic field lines developing along the length of the conductor. So if the magnetic field lines are more in number, naturally the field strength will be more. So how do you actually see the characteristic in terms of these concentric circles arranging themselves? Now ये जो concentric circles with higher current develop होंगे, they will be more in number, they will be closer to each other, and naturally इनका expanse थोड़ा सा बढ़ जाएगा. So that is a very obvious thing to happen. So now if you take conductors of longer length, what will happen? We will see that the number of magnetic field lines developing along the entire length is going to increase. So naturally magnetic field बढ़नी ही है. So these are the factors which are going to impact the strength of the magnetic field. Now moving on to understanding the factors which impact the magnetic field strength in a circular coil. So the number one point, current. More the current, more will be the magnetic field strength. What else? Now the strength of the magnetic field which develops in a circular coil is inversely proportional to the radius. Means if the radius of the circular coil is more, the magnetic field strength is smaller. सर्कुलर कॉइल में तो सिर्फ हमने एक ही कॉइल कंसिडर किया है, बट ऐसे अगर बहुत सारे कॉइल्स हों, अ नंबर ऑफ कॉइल्स इन सीरीज, सो व्हाट विल हैपन? इट इज गोइंग टू naturally enhance the magnetic field strength. So more the number of turns in the coil, more will be the magnetic strength. So now these were some of the factors which were impacting the magnetic field strength in a straight line conductor and in a circular coil. But ये concept of circular coil को हम और आगे अप्लाई करेंगे, wherein we will have more number of turns would be for a solenoid. But इस पे जाने के पहले let us first understand the nature of the magnetic field lines that develop along these two types of conductors which we have already done. Now about the nature of magnetic field lines that develop along a straight line conductor and about a circular coil. कहीं ना कहीं तो हम ये पढ़ ही चुके हैं, but let us just put them all together. So in a straight line conductor
the kind of magnetic field lines that develop along the length of the conductor are in concentric circles, right? And the second point, it lies, the magnetic field lines, they lie in a plane which is perpendicular to the conductor. बड़ी obvious है. अब ये हमारा conductor है and this is the plane of the magnetic field lines. So the direction of the magnetic field lines is perpendicular to the conductor. So this is what it means. Alright, moving on to the nature of magnetic field lines in a circular coil. Now we know that even along the circular coil you have the magnetic field lines all in concentric circles along all segments of the circular coil. They are all in concentric circles. Now the other part is all about the magnetic field lines ending up becoming parallel to each other, all in the same direction along the axis of the coil or along the center of the coil, and hence the magnetic field strength is the maximum along the axis of the coil, right? So this is what it is when it comes to the nature of magnetic field lines. अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और मूव करते हैं टूवर्ड्स मोस्ट अवेटेड सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड से जाएंगे फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ. व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सो हमारा सोलेनॉइड कुछ ऐसा दिखता है. लेट अस डिस्क्राइब इट. So when insulated copper wire is wound closely in turns to form a cylinder, this cylinder is called a solenoid. So बहुत compact way में these turns are closely wound together. So बहुत सारे turns, एक coil हमने पढ़ा हुआ है. So ऐसे n number of coils in the form of turns of copper windings have been created and in the form of a cylinder. So this is what solenoid is. Notice करें, there is a space within these windings. So this space is a hollow space. Alright. Now if you represent these coils in the form of a figure, this is how our copper windings are going to be represented. Now what happens if this solenoid is connected to a current source? So the current starts to flow through these copper windings और नतीजा क्या होगा? Well, magnetic effect of electric current, magnetic field lines develop हो जाएंगे through these copper windings. Let's see how this works. Alright. So ये रहा हमारा solenoid. Alright. Solenoid को कनेक्ट किया हमने current source एक बैटरी से. Now the moment the circuit is complete, current starts to flow. When current starts to flow, this is how it moves through the set of coils, right? This is how it moves through the set of coils, and the resultant is we get magnetic field lines flowing through this set of coils here. And this solenoid now starts to behave as a bar magnet. Question क्या आता है एग्जाम में? By means of a diagram, show how a solenoid behaves as a bar magnet. So this is exactly what we are going to discuss now, and we are going to complete this figure and analyze more aspects of the solenoid. So let's see how this is going to work as a bar magnet. How does it become a bar magnet? Well, magnetic field lines जब develop होनी शुरू होती हैं circular coil में, so how does the representation, if we just go back to the coil, let me go back to that figure once again. I am looking for the circular loop. Okay, so this was our circular coil, right? So one circular coil looks something like this with the magnetic field lines flowing almost parallel to each other along the axis, and side वाले जो portions हैं वहाँ पे we have concentric circles. So we end up creating magnetic field lines along the axis of the circular coil. So इसको अगर हम horizontally visualize करें, ये magnetic field lines along the axis of the solenoid कैसे दिखेंगे? Let's draw that figure, complete that figure. So along the axis, these magnetic field lines are running almost parallel to each other. And बाहर side में क्या होगा? Means outside the set of coils. We know that magnetic field lines are continuous loops, right?
सो यहाँ पे इस लूप को हम करेंगे कंप्लीट एंड आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस outside the bar, outside the coil look something like this. These magnetic field lines don't cross each other where I don't have much space here, right? All right. So कुछ ऐसा दिखेगा. Now that I have drawn my magnetic field lines, how do I represent my poles? Because if it is to behave as a bar magnet, there has to be development of two poles, north pole and south pole. कैसे पता चलता है कि कौन सा पोल कहाँ डेवलप हुआ है? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मूव टू एंड देन कम टू लेबलिंग आर पोल्स आउट हियर. सो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा द क्लॉक रूल. सो क्लॉक रूल से हम कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि कौन से एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे कौन सा पोल डेवलप हुआ है. सो लेट्स गो टू द क्लॉक फेस रूल. According to the clock face rule, when we face one of the ends of the solenoid, so if this is our solenoid and we are facing this end of the solenoid, that means we are seeing it from here. All right. So in that case, if the direction of current through the solenoid is clockwise, then the kind of polarity that develops on that end of the solenoid is a south pole. On the other hand, if the direction of current on that particular side of the solenoid which we face happens to be in the anti-clockwise direction, then the polarity that develops at that end is a north pole. नहीं समझ आया? देखते हैं फिर से. All right. Now if you look at when we write down south, okay, S, how do you write down S? So if you write S and mark the end of the S with arrows, then the end points, if you look at it, it's moving in a direction which is clockwise. See, it is moving in the clockwise direction. So it is easy for us to now remember that if you have drawn your S in a pattern, suppose हम भूल गए कि clockwise में south होता था या north होता था, we can just write down S and N and see how the direction of current happens to be, judging it by the end arrows. So if my direction of the arrows, just check this out, happens to be in the clockwise direction, it is a south pole. So this is clockwise. And if it happens to be in the anti-clockwise direction, ये लिखा हमने N. All right. So if it happens to be in the anti-clockwise, what happens to be in the anti-clockwise? Current happens to be in the anti-clockwise direction. Then the kind of polarity which develops on that face of the solenoid which we are facing is a north pole, right? So अगर हम इसी फिगर पे वापस से जाएं और देखें, if you look at this figure, look at this end. So इसमें डायरेक्शन जो दी हुई है, it is this, right? So if I look at it, so this is my face here, facing this end of the coil, and the direction of current is given to us in this particular format. So it is a clockwise direction. So clockwise direction का मतलब it is a south pole. It's as simple as that. अगर एक end south pole है तो naturally दूसरा end north pole होगा. So if I view this same figure from the other end, the direction of current is now anti-clockwise. So if it is anti-clockwise, well, north pole has developed at that end of the solenoid. It is very very simple to assess that. So इसी format को हम चिपकाते हैं अपने figure पे. क्लॉक फेस रूल के हिसाब से अब कौन सा एंड नॉर्थ होगा और कौन सा एंड साउथ होगा, लेट अस लेबल दैट. नाउ इफ आई एम फेसिंग दिस साइड ऑफ द कॉइल, सो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज हाउ माय करंट इज फ्लोइंग. वेल, इट हैपेंस टू बी क्लॉकवाइज, सो ये पोलैरिटी हो गई है साउथ. ऑब्वियसली द अदर एंड वुड बी अ नॉर्थ. सो बन गया हमारा फिगर wherein a solenoid is behaving like a bar magnet.
Well, now that we have understood how the solenoid works, so अब जानते हैं what are the factors which affect the magnitude of magnetic field strength that develops within a solenoid. So पहला factor very obviously number of turns of the solenoid. More the number of turns in the solenoid, more will be the magnetic field strength, right? Now what about the current? If I increase the current, naturally the magnitude of magnetic field strength is also going to be enhanced, becomes bigger. So more the current, more will be the magnetic field strength. And last but not the least, something which we have not touched upon, the material of the core. अब ये core क्या होता है? So वापस से चलते हैं अपने उस सोलेनॉइड के फिगर के तरफ जहां हमने दिखाया था कि सोलेनॉइड के पास है एक हॉलो स्पेस. वेल, इस हॉलो स्पेस में इफ वी इंसर्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, दैट इज वी क्रिएट अ कोर विद इन इट ऑफ सॉफ्ट आयरन, यू कॉल इट द सॉफ्ट आयरन कोर. आयरन क्या करेगा? वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इधर उधर जा रहे होंगे अपने थ्रू कॉन्सेंट्रेट कर लेगा एंड देयरफॉर एनहांसेस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. So that is how the soft iron core adds to the magnetic field strength of any solenoid. तो factors तो हमने कर लिए. अब वापस से समझते हैं what are the characteristics of these field lines, right? ये field lines जो होते हैं they are nearly parallel to each other, straight and parallel to each other along the axis of the coil. This is what I mean, right? And what about the poles which develop? Well, because it is behaving like any other bar magnet, it is going to have two poles, and at the two poles the magnetic field strength is going to be stronger than at any other point outside the bar magnet, I mean the solenoid. Because it is now behaving as a bar magnet, it exhibits all properties of a bar magnet as well. So हो गया जी, ये तो अब हम समझ गए. अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की ओर, बनाते हैं अब अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो ये रहा मेरा सॉफ्ट आयरन कोर, और इस कोर पे हम करेंगे कॉपर वाइंडिंग्स. ये टर्न्स कुछ ऐसे दिखेंगे. ये बन गए हमारे कॉपर वाइंडिंग के टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. अब इसे हमने कनेक्ट कर दिया वाया अ स्विच टू अ बैटरी. बैटरी करेगी करंट की सप्लाई. All right, so this is something which we have set up. Now current starts to flow. अब क्या होगा when current starts to flow? Well, this is going to behave as a magnet, right? So जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कब बिहेव करेगा? जब पोलैरिटी डेवलप होगी. अब पोलैरिटी पे आ जाते हैं. किस टाइप की पोलैरिटी डेवलप हो रही है? When I look at it from this side of the electromagnet, I can see that the direction of current is clockwise. So ये डेवलप हो गया हमारा साउथ पोल. ऑटोमेटिकली the other end is a north pole. So बन गया हमारा मैग्नेट. अब ये सेटअप तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है जब तक करंट है. सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोलेनॉइड? वेल, बहुत मिलता जुलता है. वहाँ पे हमने कोर बाद में डाला था, कोर बाद में इंसर्ट किया था फॉर बेटर मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे हम ऑलरेडी वाइंडिंग सॉफ्ट आयरन कोर पर ही कर रहे हैं. सो दिस इज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमने बना लिया. सो अब बात कर लेते हैं थोड़ी फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. सो नाउ बहुत चीज़ें हम बहुत रेपिटेटिव कर रहे हैं बिकॉज ये फैक्टर्स कंटिन्यूसली इम्पैक्ट करते आ रहे हैं. वो है नंबर ऑफ टर्न्स. सो मोर द नंबर ऑफ टर्न्स you have on the electromagnet, naturally it will have a greater strength. And what about the current? More the current, more will be the magnetic field strength. अब एक और चीज आ गई है, वो है the air gap between the poles of the electromagnet. अब इसका क्या मतलब होता है? Now this is the magnet which we have created. All right. So इसमें air gap between the poles क्या है? If this is north, this is south, the air gap is about a distance of this length, isn't it? This is the length because this is how the magnetic field lines cover. अगर ये मैग्नेट छोटा होता
तो एयर गैप नेचुरली कम होता बिटवीन द टू पोल्स, राइट. So when the air gap is smaller between the two poles, the magnetic field strength is bigger. इसीलिए horseshoe magnets are stronger magnets. So why so? अगर हम horseshoe magnet बनाएं, so if you make it straight, the difference between or the distance between the north and south poles is becoming big. But once it is in this shape of a horseshoe, what happens? The air gap between the two poles is small and therefore the magnet is stronger. So this is another factor which is impacting the strength of the electromagnet. So electromagnet को कर लिया हमने खत्म, but अभी भी हमारा एक point address नहीं हुआ है. Why DC current when we are creating electromagnets? क्यों AC से हमारा मैग्नेट नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा. प्रॉब्लम क्या है फिर? वेल प्रॉब्लम ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स जो होते हैं they show a continuous change in magnitude. I'll just show it to you how it looks. Okay, so if you look at the alternating current, so जिसे हम AC current बोलते हैं, it has a constantly changing magnitude and direction. एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस. So this is how the magnitude of it changes and also its direction. सो जीरो लाइन से कभी इस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में. सो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. तो क्या होगा? वेल अगर मैग्नीट्यूड करंट का कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो पोलैरिटी भी तो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है उसकी कंटिन्यूसली चेंज करेगी. और अगर चेंज करेगी तो नेचुरली बार बार हमारे पोलैरिटीज फ्लिप होते रहेंगे, राइट. सो इट इज़ नॉट अ डिजायरेबल कंडीशन फॉर श्योर, राइट. सो हम प्रेफर करते हैं डायरेक्ट करंट. सो डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन्स फिक्स्ड. सो नेचुरली हमारे पोलैरिटी में स्टेबिलिटी रहती है. सो नॉर्थ रिमेन्स नॉर्थ, साउथ रिमेन्स साउथ टिल द टाइम वी वांट टू चेंज इट. ऑल राइट. सो दिस वाज इट अबाउट व्हाई डीसी इज यूज्ड प्रेफरेबली. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की कहानी होती है ख़त्म. बस इतनी सी तो थी बात. एंड इफ़ यू हैव परफेक्टली अंडरस्टूड इट, रिमेंबर टू लाइक इट एंड शेयर इट. औरों को भी तो थोड़ा फ़ायदा हो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले. व्हाई नॉट? एंड डू रिमेंबर टू जॉइन मी अगेन ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और भी पार्ट्स आ रहे हैं. बाय बाय.